श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 36 of the KishkindhaKandam, which has 20 verses. When Lakshmana gets pacified by the conciliatory words of Tara, Sugriva glorifies Sri Rama and requests Lakshmana to forgive his delinquency. Regaining his normal self, Lakshmana too craves the forgiveness of Sugriva for the harsh language employed by him in a fit of anger and asks him to approach Sri Rama and beg his pardon. आज हम किष्किंधा कांड के षट्त्रिंशा सर का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 20 श्लोक हैं। सुग्रीव का अपनी लघुता तथा श्री राम की महत्ता बताते हुए लक्ष्मण से क्षमा मांगना और लक्ष्मण का उनकी प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहना। इत्युक्तः तारया वाक्यं प्रसृतं धर्मसंहितं मृदु स्वभावः सौमित्रिः प्रतिजग्राह तद्वचः। तारा ने जब इस प्रकार धर्म के अनुकूल विनय युक्त बात कही, तब कोमल स्वभाव वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उसे मान लिया और क्रोध को त्याग दिया। Spoken to by Tara in these polite words, consistent with righteousness, Lakshmana, son of Sumitra, who was gentle by nature, received those words with approbation. तस्मिन् प्रतिगृहीते तु वाक्ये हरिगणेश्वरः लक्ष्मणात् सुमहत् त्रासं वस्त्रं क्लिन्नम इवात्यजत्। उनके द्वारा तारा की बात मान ली जाने पर वानर युद्धपति सुग्रीव ने लक्ष्मण से प्राप्त होने वाले महान भय को भीगे हुए वस्त्र की भांति त्याग दिया। The aforesaid submission of Tara having been received with a nod, Sugriva, the ruler of hordes of monkey, for his part, shed his very great fear of Lakshmana as one would discard one's wet clothes. ततः कंठगतं माल्यं चित्रं बहुगुणं महत् चिच्छेद विमदश्चासीत् सुग्रीवो वानरेश्वरः। तदंतर वानर राज सुग्रीव ने अपने कंठ में पड़ी हुई फूलों की विचित्र विशाल एवं बहुगुण संपन्न माला तोड़ डाली और वह मद से रहित हो गए। Thereupon Sugriva, the lord of monkeys, tore off the wonderful and valuable garland capable of yielding various enjoyments worn round his neck and was rid of his vanity thereby. स लक्ष्मणं भीमबलं सर्व वानर सत्तमः अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं सुग्रीवः संप्रहर्षयन्। फिर समस्त वानरों में शिरोमणि सुग्रीव ने भयंकर बलशाली लक्ष्मण का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे ये विनय युक्त बात कही। The aforesaid Sugriva, the foremost of all monkeys, then addressed the following humble submission to Lakshmana of redoubtable might, thus causing him supreme gratification. प्रणष्टा श्रीश्च कीर्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतं रामप्रसादात् सौमित्रे पुनश्चाप्तमिदं मया। सुमित्रा कुमार, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आता हुआ वानरों का राज, ये सब नष्ट हो चुके थे। भगवान श्री राम की कृपा से ही मुझे पुनः इन सब की प्राप्ति हुई है। My fortune and fame too, as well as the lasting rulership of monkeys, which had been lost forever, all this has been regained by me through the grace of Sri Rama alone, O son of Sumitra. कः शक्तः तस्य देवस्य क्यातस्य स्वेन कर्मणा तादृशं प्रतिकुर्वीत अंशेनापि नृपात्मज। राजकुमारी, वे भगवान श्री राम अपने कर्मों से ही सर्वत्र विख्यात हैं। उनके उपकार का वैसे ही बदला अंश मात्र से भी कौन चुका सकता है। What powerful being can repay even in part, O Prince, that kind of service on the part of the aforesaid divine personage of Sri Rama, who is known by his exploits. सीतां प्राप्स्यति धर्मात्मा वदिष्यति च रावणं सहाय मात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा। धर्मात्मा श्री राम अपने ही तेज से रावण का वध करेंगे और सीता को प्राप्त कर लेंगे।
मैं तो उनका एक तुच्छ सहायक मात्र रहूंगा। With me as his mere companion, Sri Rama, the son of the Raghu, whose mind is set on virtue, will recover Sita and dispose of Ravana by dint of his own fiery energy. सहाय कृत्यं किं तस्य येन सप्त महाद्रुमाः गिरिश्च वसुधा चैव बाणेन एकेन दारिताः। जिन्होंने एक ही बाण से 7 बड़े बड़े ताल, वृक्ष, पर्वत, पृथ्वी, पाताल एवं रहने वाले दैत्य को भी विदीन कर दिया था, उनको दूसरे किसी सहायक की आवश्यकता भी क्या है? What need is there for an assistant to Sri Rama, by whom 7 giant trees, as well as the mountain on which they stood, as also the earth forming the base of the mountain, were pierced with a single arrow? धनुर् विस्पारमाणस्य यस्य शब्देन लक्ष्मण स शैला कंपिता भूमिः सहायैः किं नु तस्य वै। लक्ष्मण जिनके धनुष खींचते समय उसकी टंकार से पर्वतों सहित पृथ्वी कांप उठी थी, उन्हें सहायक से क्या लेना है? In fact, what help on earth can be rendered by associates to Sri Rama, at the twang of whose bow, while he was stretching it, the earth with its mountains shook, O Lakshmana? अनुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्ये अहं नरऋषभ गच्छतो रावणं हन्तुं वैरिणं स पुरस्सरम्। नरश्रेष्ठ, मैं तो वैरी रावण का वध करने के लिए अग्रगामी सैनिकों सहित यात्रा करने वाले महाराज श्री राम के पीछे पीछे चलूंगा। I shall join the expedition of Sri Rama, the ruler of men, O Juval among men, when he goes forth to get rid of his enemy Ravana with those who go before him to lead his army. यदि किञ्चित् अतिक्रान्तं विश्वासात् प्रणयेन वा प्रेष्यस्य शमितव्यं मे न कश्चिन् अपराध्यति। विश्वास अथवा प्रेम के कारण यदि कोई अपराध बन गया हो तो मुझ दास के उस अपराध को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई सेवक नहीं है जिससे कभी कोई अपराध होता ही ना हो। If any transgression has been made by me, your servant, out of confidence or love, it should be forgiven by you, for there is none, even among the servants, who does not do wrong. इति तस्य ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः अभवत् लक्ष्मणः प्रीतः प्रेम्णा च इदम् उवाचः। महात्मा सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण प्रसन्न हो गए और बड़े प्रेम से इस प्रकार बोले। While the high-souled Sugriva was speaking as aforesaid, Lakshmana got pleased with him, they say, and lovingly replied as follows. सर्वथा हि मम भ्राता सनातो वानरेश्वर त्वया नातेन सुग्रीव प्रश्रितेन विशेषतः। वानर राज सुग्रीव, विशेषता तुम जैसे विनयशील सहायक को पाकर मेरे भाई श्री राम सर्वथा सनाथ हैं। With you, O Sugriva, as his supporter, particularly so humble, my eldest brother Sri Rama is blessed in every way, O Lord of the monkeys. यस् प्रभावः सुग्रीव यच्छते शौचं ईदृशम् अर्हस्त्वं कपिराज्यस्य श्रियं भोक्तुम् अनुत्तमाम्। सुग्रीव, तुम्हारा जो प्रभाव है और तुम्हारे हृदय में जो इतना शुद्ध भाव है, इससे तुम वानर राज्य की परम उत्तम लक्ष्मी का सदा ही उपभोग करने के अधिकारी हो। By virtue of the dignity that you possess, O Sugriva, and the purity, the guilelessness of heart of the kind that exists in you, you deserve to enjoy the unsurpassed opulence of the kingdom of monkeys. सहायेन च सुग्रीव त्वया राम प्रतापवान् वदिष्यति रणे शत्रून् अचिरात् न अत्र संशयः। सुग्रीव, तुम्हें सहाय के रूप में पाकर प्रतापी श्री राम रणभूमि में अपने शत्रुओं को का शीघ्र ही वध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। With you as his associate, O Sugriva, the glorious Rama, for his part, will before long destroy his enemies on the battlefield. There is no doubt about it. धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य संग्रामेषु अनिवर्तिनः उपपन्नं च युक्तं च सुग्रीव तव भाषितम्।
सुग्रीव, तुम धर्मज्ञ, कृतज्ञ तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले हो। तुम्हारा ये भाषण सर्वथा युक्ति संगत और उचित है। You, being a knower of what is right, grateful, and one who has never turned one's back on the fields of battle, your submission, O Sugriva, is just and reasonable too. दोषज्ञः सति सामर्थ्ये को अन्ये भाषितुमर्हति वर्जयित्वा मम ज्येष्ठं त्वां च वानरसत्तम। वानर शिरोमणे, तुमको और मेरे बड़े भाई को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा विद्वान है जो अपने में समर्थ होते हुए भी ऐसा नम्रतापूर्ण वचन कह सके? What individual who is conscious of his own faults, other than my eldest brother Sri Rama and yourself, O jewel among the monkeys, can speak so disparagingly of himself as you have done, even though possessed of strength? सदृशश्चासि रामेण विक्रमेण बलेन च सहायो दैवतैः दत्तश्चिराय हरिपुंगव। कपिराज, तुम बल और पराक्रम में भगवान श्री राम के बराबर हो। देवताओं ने भी हमें दीर्घ काल के लिए तुम जैसा सहायक प्रदान किया है। You are on par with Sri Rama in the prowess and might, and have been ordained as the gods as his associate for a long time to come, O jewel among monkeys. किं तु शीघ्रं यथो वीर निष्क्रम त्वं मया सह सान्त्वयस्व वयस्यं च भार्याहरण दुःखितम्। किंतु वीर, अब तुम शीघ्र ही मेरे साथ इस पुरी से बाहर निकलो। तुम्हारे मित्र अपनी पत्नी के अपहरण से बहुत दुखी हैं, उन्हें चलकर सांत्वना दो। But sally you forth with me speedily from this place, O gallant king, and reassure your friend Sri Rama, who is afflicted through the abduction of his spouse. यच्च शोकाभिभूतस्य श्रुत्वा रामस्य भाषितं मया त्वं परुषान् युक्तः तत् क्षमस्व सखे मम। सखे, शोक मगन श्री राम के वचनों को सुनकर जो मैंने तुम्हारे प्रति कठोर बातें कह दी हैं, उनके लिए मुझे क्षमा करो। And forgive my friend the way in which you have been spoken to in harsh words on hearing the lament of Sri Rama, who was overwhelmed with grief. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 36 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अश्व रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 36 in the KishkindhaKandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Sri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपताम प्रहर्तारम दातारम सर्व संपदा लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।